तो राधे राधे भाई, जय बुंदेलखंड। आ गया यूट्यूब का नया अपडेट। यूट्यूब पर जाकर आप भी बहुत ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। ये तो मुझे जाकर ही पता चला। YT स्टूडियो पर गया, वहां पर मिल गया मोनेटाइज होने का बटन। तो मेरे भाई मैंने जल्दी से जल्दी क्लिक किया और मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से जल्दी जाकर अपना प्ले बटन लें और चैनल को मोनेटाइज भी करें। देर किस बात की, अपन देखते हैं YT स्टूडियो में जाकर। तो एक लाने अपन को कुछ नहीं करना, आपको जाना है YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो पर ओपन करके ये देखो, यहाँ पर देखो ये रहे हमारे सब्सक्राइबर, देखो 26 से 71 हैं। इसको देखो नया चाहिए रहा, नया फैक्स को पहचाने का मौका पाएं, इस पर करना है आपको। क्लिक करने के बाद करना है शुरू। देखो शुरू करने के बाद गाइस आपको ये देखना है आपका कंटेंट। देखो ये रहा कंटेंट। तुम्हारा कंटेंट किस तरीके का जा रहा है, यूट्यूब को पसंद आ रहा है कि नहीं। और ये के देखो, देखो ये रहे, देखो हमारे चैनल के दर्शक और ये रहे सदस्य और यहाँ खास जानकारी। इस पर क्लिक करने के बाद भाई लोग देखो ये रहा हमारे व्यू, कितने हमारे देखो व्यू हैं भाई लोग, वो भी कितने दिन के, 1 सप्ताह के। और ये रहे वॉच टाइम, वो भी 1 सप्ताह का। ये देखो इसके बाद आपको करना है थंबनेल बनाने के लिए सबसे सही सुझाव, इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये देखो पढ़ दिया, थंबनेल देखकर दर्शक तक करते कि आपका वीडियो देखना या नहीं। ये के बाद आपके लाना स्क्रॉल करना है। ये देखो ये थंबनेल सही तरीके से काम कर रहा है। आपका अगर थंबनेल बनाओगे तो आपका थंबनेल सही तरीके से काम करेगा, तो आपको देखेगा आदमी। इसके बाद फिर स्क्रॉल करना है। ये थंबनेल बनाने बेहतर करने का सही तरीका बताया गया है। इसको आपको ओपन करके बगल स्क्रॉल कर देना है। फिर देखो पक्का करें कि वे साफ देखें और उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। तो आपको भाई लोग थंबनेल अच्छी तरीके से बनाना है, जो आपका टारगेट रहेगा वो सही तरीके से देखा जाए। तो ये खिलाना है आपको, फिर स्क्रॉल करना है। ये देखो दूसरे क्रिएटर के थंबनेल के मुकाबले आकर्षक है, माने दूसरे क्रिएटर जैसा थंबनेल बनाएं कि आपको लोग देखकर सपोर्ट करें, आपके देखकर और चैनल पर जाकर आपकी वीडियो को क्लिक करें। इसके बाद फिर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि अपना स्टाइल बनाएं, जाने पहचाने रंग, चेहरे और फॉन्ट से दर्शक को आपके चैनल पर वापस आने में मदद मिलती है। और दूसरा, इन्हें आसान तरीका, चमकदार रंग और डिजाइन दर्शकों का ध्यान को खींचता है। माने अच्छी आपको कुछ बनाओगे तो आपका ध्यान खींच लेगा थंबनेल, तो आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। एक के बाद नीचे सही दर्शकों को टारगेट, आपने दर्शक की पसंद के हिसाब से डिजाइन मैच करें, इस साथ अपने कंटेंट की मदद उन्हें जान पहचान बढ़ाए। माने आपका कंटेंट देखेगा और आपकी जान पहचान ज़्यादातर होगी। इसके बाद आपको इसको करना है और ये रहा ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस पर थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब पर फेंक दिया जाएगा, माने यूट्यूब पर जाओगे और आपको वीडियो बताने लगेगा। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देख लो पूरी वीडियो देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब का प्ले बटन भी मिल जाएगा और आपको सही तरीके Hey से कंटेंट creators, बनाने का let's सिस्टम भी talk मिल about जाएगा। titles तो and भाई लोग thumbnails. देखो, The first things your audience sees when deciding what to watch. Think of them as your content's billboard. You want to tell a story, spark curiosity, share a sneak peek, and attract more viewers to your videos. We'll cover things to keep in mind when designing thumbnails, tips for writing titles, and how to use analytics to see how these elements are performing. Let's dive in. First, let's talk about thumbnails. Before you design, consider who your target audience is. If you're catering to your subscribers, you may want to feature familiar elements, like a picture of you or your pets. Or if you want to appeal to a broader audience, you can use universally recognizable elements and ask yourself, what value is your video offering the viewer, and how can the thumbnail help communicate that and encourage viewers to watch? Be accurate. It's also very important that thumbnails accurately reflects your content, which can lead to better watch time. On the flip side, a misleading thumbnail can lead to decreased watch time, as viewers might click off as soon as they realize it didn't accurately represent the content itself. Go for the emotional impact.
think about how you can express a story or an emotion in your thumbnail. For example, include a moment of peak discovery, conflict, or excitement to hook your viewers. Take pictures during your shoot of faces or relevant props so you have several options to include when creating your thumbnail. And finally, familiarize yourself with our thumbnails policy in the Help Center to make sure yours doesn't violate our community guidelines. Now that you're done planning, here are some design tips to help you bring your idea to life. Make the design pop, even on small screens. A lot of viewers are on mobile devices, so make sure the thumbnail still looks good and readable shrunk down. We recommend 1280 by 720 pixels, which is a 16:9 ratio, and saving it as a JPEG, GIF, BPM, or PNG. Use the rule of thirds. The rule of thirds is a guideline used in visual design. It states that if you divide your image into thirds, both horizontally and vertically, the main subject or element should be where these lines intersect. This helps create interest in the composition of your thumbnail. And don't make the design too busy. Dynamic use of color and composition can help catch the eye, but too much can be overwhelming. Strike a balance when using lots of color or elements. And remember, tastes change over time. Don't be afraid to experiment with new thumbnail designs and even update old ones that haven't performed well to increase your video's appeal to new viewers. Next up, let's talk about titles. Just like with your thumbnail, your title can help a viewer decide if they want to watch your video. You can think of titles in two categories: searchable and intriguing. Searchable titles are more straightforward, like how to tie a tie. These cater towards viewers' pre-existing interests and appeal to those who are searching for specific